नहीं, आप, your lordship never permits to make my submission. This is not proper on your part. Your lordship should know. Order. My lord, your lordship must know that your lordship is sitting there and to listen to my humble. This is the presumption. नहीं, आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे. उस दिन भी आपने बोलने नहीं दिया. मैं एक शब्द बोलता हूं तो आप मेरे को रोकते हैं, उनकी बातें सुनते हैं. देखिए, आपका अधिकार है जजमेंट देने का. मेरा निवेदन है मेरे को सुनने का. आप मेरी बात नहीं सुनते. उस दिन भी मेरी बात नहीं सुनी. My client is so terrorized. Please understand my problem. I am not a wrong man, but I am in this business. I have to subject myself to the pressures of the excise department. My lord, humble request, kindly go through this note. I don't think it will be needed. Sorry? My humble request is kindly. My lord, they have paid the money. Mr. Rupra, this is totally unfair then. My lord, You I am are bound by you are taking very bold stand. Nothing is received, this, that. So that's why you have taken the steps to call all the one. My lord, I am Who is bound the by person? the. Listen. I am bound by the Listen, instructions of three my dates, client. Mr. Rupra, That's all. 3 dates you have wasted, and who is the person, response number 5? Ask him to pay the cost. This is not the way. You have come with the compromise and paid the money, and 3 dates you are taking the stand, nothing is received. It is all false. Call the My person. lord. Who is your responsible? Pardon? Response number 5. No, respondent number 5 is not here. There is a compromise entered. Forget about Mr. Rupra. That is up to the court whether they accept the compromise or not. My lord, there is a compromise entered into between इसके the petitioner and respondent number 5. My lord, Mr. Rupra, this is not the way. First, ask your client to come in the court. my lord, Please your take lord, this court for granted. your lordship, when the matter has been compromised, Mr. there is no Rupra, need listen, of this any is not the way. adjudication. It is, court has to accept the compromise. Why 3 dates you wasted and taken the different stand? My lord, there are Despite many. Mr. Rupra, listen, despite first date, repeatedly you send the accident of when nothing received. Exactly. This is all false. Then There nothing has been received. So But then there why- are many pressures which आप मेरी बात सुनिए ना. आप बताइए. I am here now. I have got more आप knowledge of the आप helm of affairs. response number आप 5 मेरी क्यों बात नहीं है? नहीं सुनते. Response Problem number क्या है 5. आपके? Mr. Rupra, listen. नहीं, आप, Don't your lordship shout. never Listen, don't permits shout. to make my submission. Listen, This is not proper Mr. on your Rupra, part. listen. Your lordship should know. Order. My lord, your Listen, Mr. lordship Rupra, must you know are not the that your authority. lordship is sitting What there are you to talking? listen Yes. to my humble submission. Listen. अरे मेरी बात आपने देखिए उस दिन आपने ऑर्डर शीट मेरी Mr. बात सुनिए. Mr. आप मेरे को Rupra, बोलने नहीं देते. Mr. That is the- Rupra, देखिए आप- superior आपने- wisdom always flows from the Listen, pen of ये the तो- honorable ये तो court. गाउन है This ना, is the गाउन। presumption. ये तो नहीं, गाउन आप है। मेरे को बोलने नहीं दे रहे. उस दिन भी आपने बोलने नहीं दिया. मैं एक शब्द बोलता हूं तो आप मेरे को रोकते हैं, उनकी बातें सुनते हैं. मैंने बोला है नॉट रिसीव्ड. मैंने आपने जो ऑर्डर शीट में जो एक डॉक्यूमेंट रेफर किया है, आई एम सरप्राइज टू सी दैट डॉक्यूमेंट योर लॉर्डशिप ऑर्डर्ड देम टू गिव टू मी. दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट सप्लाइड. Annexure P3 is totally false, fabricated document. It does not contain the Say signature. so. My lord, please permit me. Say so. Problem ये आप मेरे को बोलने नहीं देते. Listen. देखिए, आपका अधिकार है जजमेंट देने का. मेरा निवेदन है मेरे को सुनने का. आप मेरी बात नहीं सुनते. उस दिन भी मेरी बात नहीं सुनी. My client is so terrorized that even though he has not taken one single bottle, he has compromised the matter. Why did he But in change spite of that, my lord wants to. आप मेरी बात सुनिए सर. आप मेरी बात सुनिए. पहली बताइए Mr. Rupra, इस हाई कोर्ट के अंदर Mr. Rupra. ऐसा नहीं. मेरी बात सुनिए ना. आप मेरा Mr. निवेदन Rupra तो सुनिए. मेरा सुना है, Mr. Rupra, this is not the way. नहीं, आप मेरी बातें नहीं सुनते. कोर्ट की बात सुनेंगे देखिए, पहले आप। आपका अधिकार इतना ही है कि आप जजमेंट दें, अच्छा, परंतु निवेदन तो एक- करने का एक- अधिकार है. अच्छा, एक- That is what I am doing. अच्छा, let me pass the order. देखिए, Sir, मैं आपको ये बात बोल रहा हूं. Mr. Rupra, आपने जो ऑर्डर शीट लिखी, आप मेरी बात सुनिए पहले, फिर आप जो ऑर्डर करेंगे सिर मत्थे है. आप बोलोगे इनको इतना पैसा दो, ये दो. इट इज ऑल वी आर योर लॉर्डशिप इज करेक्ट एंड वी आर रॉन्ग. बट सबमिशन तो बोलने दीजिए. आप सबमिशन ही करने देते. देखिए, एक आपकी- डॉक्यूमेंट एनेक्सचर P3 है, उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड में नहीं है. उसके आधार पे आप मेरे को बोले पैसा दीजिए. एंड माय लॉर्ड, देयर इज सो मच प्रेशर ऑन मी दैट आई वाज कंपेल्ड टू पे दिस मनी. प्लीज अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम. I am not a wrong man, but I am in this business. I have to subject myself to the pressures of the excise department. Whatever they say, I have to do. All those documents which my lord relied upon and mentioned in the order sheet, copies of them are not supplied to me. Lord, Annexure P3 is totally false and fabricated document. If my lord wants to contest, then my lord, I will say, produce the original Annexure P3. Then I will examine each and everything. Same place, my lord, at 8 a.m., a person has signed at one place. Same place, the same person has signed at another place 8 kilometers ago. My lord, there is so much of chaos in this Annexure P3. It is not a signed document. When I am saying original is not there, my lord is relying upon this Annexure P3. And lord, your lordship said, and lord, there was pressure on me.
So therefore, I have compromised the matter, and your lordship, please see, there is no need to go into the academic exercise. The exercise is required not only if there is a dispute. When the petitioners and respondent number 5 have compromised the matter, there is no need to go into the academic exercise. But in case my lord is interested in the academic exercise, I am lord free. I will withdraw this compromise application and I will immediately say, first, you produce the original annexure P3. I want to see it with my own eyes. I want my client to see. I want to cross-examine each and every witness of theirs. Your lordship, please see that these people are not, they can't answer my cross-examination. Annexure P3 is full of mistakes, No pehli baat to original is not there. My lord, my right is firstly to see the original annexure P3. My right is to cross-examine all those persons. Your lordship, this is not a civil trial. This is not a civil court. But my lord has been kind enough to proceed to get into the trial. I am also not open. I have been practicing in civil court also. I will cross-examine those witnesses. But first, my lord, please order them to produce the original annexure P3. Let us not waste the valuable time of this honorable court in delving upon this document, which is a photocopy. It's a fabricated document. And it does not have the signature. Please order them to produce, my lord. My one request is, annexure P3 ka original must be produced before the court. Secondly, my lord, I must get a right to cross-examine all these witnesses, lord. Their statement must be recorded verbatim, just like a civil court. I am open to trial if my lord is wanting to have that trial. Absolutely no problem. But at the cost of repetition, I am humbly submitting that the petitioner and respondent number 5 have compromised the matter. There is no need to tread upon that academics exercise, Lord. Just, okay, that's all? Yes. Okay. Then you will not speak even a single word. Let me pass the order. Right? Accordingly, the respondent state was directed to find out and produce all the signatories who have appended their signatures on Panchanama dated 31st March 2024 on the next hearing, and it was made clear that they shall be required to answer the questions of the court of the next hearing along with the office of the respondent state who are present and handed over the stock in favor of respondent number 5 after taking it from the petitioner hearing. Today, despite the direction passed by this court, respondent number 5 is not present. Stop. The counsel for Order was not uploaded. 8 seconds. Today, the counsel for respondent has produced a joint application for recording compromise between parties under order 23 Rule 3 CPC with affidavit. Stop. It is also annexed check dated 7/4/2025 for an amount of rupees. This is 25 lakh, 25 lakh in favor of the petitioner hearing. Stop. Para. When this court asked Mr. Rupra, learned senior counsel, that whether respondent number 5 is present in court or there, he created a ruckus in the court and raised voice, which has recorded in the live stream of this court. Stop. This court has no option but to hear Mr. Rupra, and instead of asking the query of this court, he raised his voice like anything. Stop. He is a senior advocate designated by this court. Therefore, we are of the view that he doesn't deserve to be a senior advocate. Therefore, we hereby direct the Registrar General of this court to put his name before the full court, whether he to be continued as a senior advocate or not. Stop. Till further order, Mr. Rupra shall not appear before this court. Stop. Since respondent number 5 is not present, and till even today he submits, he has not received the stock. Despite that,
the respondent number 5 paid an amount of rupees 25 lakh as a compromise to the petitioner, still insists that there was no instruction received. This court is wonder as to why the 20 lakh amount which is used has been paid in from the petitioner. Stop. Accordingly, bailable warrant of the respondent number 5 be issued to ensure for the rupees 25,000 to ensure his presence on the next date of hearing, list day after tomorrow. My lord, it's That's my all. humble submission. More than that, we don't want. My lord, I have Because listen, if you really want to create further problem, that is up to you. We are ready to face that. Lord, I have paid the maximum price No, for that's- making my submission. Now Whatever please we have permit paid. me to make my No, we submission. have already- Lord, there are 3 applications which I want to make. No problem. You file in the registry. And So my lord will this- be kind this is- enough to permit. Mr. Rupra, you Lord, it is my humble request that, Lord, a very serious punishment we has been don't given want to the council. Mr. Rupra, we don't Lord, want I have to submit my cases, Lord. And Lord, when my Lord is not permitting me to make my submission, so I have to, Lord, sometimes, but Ajay, this your does office- not mean, Lord, just a your very, officer- very stringent punishment has been given to Mr. me. Rupra, listen. As an advocate, Listen, Lord, listen. it is No, you are not behaving as an advocate. You are behaving as a dictator and you want to dictate the Because terms my in the Lord court. is not Yes, listening Mr. to me, Mr. my Mr. Lord. That's Rupra. my problem. No, this, your seniorship has to be reconsidered by the High Court. My Lord, it is my humble That's all. request. There Not are 3 applications. Now And you continue to raise voice like you raise. Everything is recorded, Mr. Rupra. This is a live streaming. It is not that we are. my Lord's discussing in the refusal chamber. to hear me is also recorded. Mr. Rupra, listen, we can't compromise with the dignity of the chair. Keep in mind. But my And Lord, by raising please voice like understand. you, But please you understand, will Lord, not that my Lord will have to deserve hear be to a me. serious advocate. आप मेरे If I say को so. why my Lord is not listening to me? My Lord, only thing is that my humble Rupra, prayer was Mr. Rupra, why I raised the voice. But I'm human being, Lord. I'm human being. You- Lord. Because you I have know that my client is correct, Lord. But in spite of that, under pressure, Lord, he has done all that. Pressure? Who Yes. put the pressure? We have not put it any pressure. We have not passed such an order. Excise department. Mr. Rupra, listen, don't use such type of word. We did not say it. Still, Lord, We I say humbly we request. wanted to establish That whether senior this law- designation snatching may kindly be not No, done, sorry. Lord. That's a very stringent punishment my Lord has It is given. not punishment. Mr. Rupra, we have to consider. Then these Certainly. 3 applications kindly permit me to file. The other application. My Lord, my humble request is kindly give me Mr. some Rupra, time. take Kindly for- give me take some for time. the order passed by this court, please. You will not appear in this court. My Lord, The order, listen, Mr. Rupra, if you are aggrieved, you can challenge wherever you want. no. That's all. I will make a request to my Lord. I'll not. Mr. Rupra, this is not the way. तुमने तो सिर पे चढ़ा लिया अपना आसमान पूरा. It is my humble आप request. कि इससे ऐसे Lord, I have to make my submission. आप Please you do have to not terrorize- divest me of the seniority. In this- नहीं, That is a very stringent punishment, नहीं, Lord, my Lord has given. फिर इसमें आपने क्या फॉर गारंटी ले लिया कोर्ट को अगर आपने सीरियस नहीं, बना आप मेरे को सुन नहीं रहे थे तो मैं बोलूं ना. अच्छा, आप प्लीज आपने बोलने के बाद think order from पास my किया। viewpoint, Lord. बोलने के बाद ऑर्डर पास किया, ठीक है ना? अभी भी तो आवाज के आपकी ठीक है, अब कैसे ठीक होगी? तब तो आप चिल्ला रहे थे अपना जैसे छत फाड़ देंगे इसको. आपने इतना स्ट्रिंजेंट ऑर्डर कर दिया. मेरा मुकदमा तो हम रोज आए दिन करते हैं. कोई बात नहीं, जो करना था ऑर्डर कर दिया. दैट्स ऑल. अच्छा सुनो, बाकी कौन है इसको? ये मेरी तमाम एप्लीकेशन. दे दिए ना, हमने बोल दिया रख लो इसके अपील. दैट्स ऑल. हाँ, दूसरे कौन है आपका ऑफिसर कौन है? अच्छा, एक और मेरा निवेदन सुन लीजिए. आज जो आपका परसों का ऑर्डर है वो अपलोड नहीं हुआ था. कोई बात नहीं. इसलिए आपने आप मिस्टर रुपरा, यू आर प्रेजेंट इन कोर्ट. आप ठीक नहीं एक सेकंड, आपकी प्रेजेंस में हुआ, मेरी प्रेजेंस में आपने ऑर्डर ऐसा- नहीं, परंतु तो- मैंने जब उसका वीडियो सुना तो मेरे को रिस्पॉन्ड नंबर 5 की पर्सनल प्रेजेंस नहीं सुनी. इसमें प्लीज अंडरस्टैंड माय नंबर प्रॉब्लम. आपकी प्रेजेंस में सब कुछ हुआ, आपको बिल्कुल सुना है और आप ठीक है, बाकी हम देख लेंगे, नो प्रॉब्लम. सर, मेरा आपसे पुनः रिक्वेस्ट है आप- कि देखिए, ये दिस इज समथिंग बिटवीन द पिटिशनर एंड रिस्पॉन्ड नंबर 5. व्हाई द काउंसिल शुड पे सच अ हेवी बिकॉज प्राइस? काउंसिल क्रिएटेड रक्कस इन द कोर्ट. माय लॉर्ड, That's why योर लॉर्डशिप आल्सो you have रिफ्यूज not, टू हियर Mr. Rupa, ये तो गलती है ना. आप you have not behaved like a officer of the court. पर आप मेरे को सुन नहीं रहे थे. आपकी तो सुनने का रहता है ना. हमने सुना है ना, सुनने के बाद बोला. नहीं, आप मेरे को, मैं वाक्य बोलना चालू करता, आप बीच में टोक रहे हो. आप सुनो, हम टोक नहीं रहे, बल्कि आपकी आदत ये है कि आप ना इंटरजेक्ट करते हैं बार बार. और मैंने एक बार नहीं, कितनी बार आपको कहा कि डोंट इंटरजेक्ट लाइक दिस. आप तो अपना रनिंग कमेंट्री लगे रहते हैं. एंड यू आर दी ओनली पर्सन इन दिस बार
जो इंटरजेक्ट की अदरवाइज यहाँ कोई आदत नहीं है, एक सुनता दूसरा आराम से खड़ा होता, पर आप कुछ ना कुछ छोड़ते रहते बीच में। वो इसलिए आप क्योंकि बिहेव प्रॉपर्ली मिस्टर रूपा। मिस्टर दिवाकर को आपको तो अच्छे से सुन रहे थे, मेरे को नहीं सुन रहे थे सर। बस कोई होगा तो फिर ठीक है, बट डोंट अपीयर बिफोर दिस कोर्ट। आपको अगर है कोई करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा तो होने दो। अपने पक्षकार की पैरवी ना करें। आपकी पक्षकार की पैरवी करो, दूसरी कोर्ट पढ़िए। हमारे पास आपका कोई मैटर होगा तो विल ट्रांसफर दिस मैटर, वी विल नॉट हियर नहीं, दैट। परंतु मेरे को सीनियर डेजिग्नेशन से आपने जो हटाया, दैट इज वेरी स्ट्रिंजेंट सर। हमने नहीं हटाया। इतना बड़ा दोष नहीं है मेरा। अभी सुन लो, फिर मिस्टर रूपा फिर आप क्रिएट कर रहे हैं। हमने नहीं हटाया, हमने फुल कोर्ट को रेफर किया कि दोबारा इसका कंसिडर करें वेदर इज अ फिट और नॉट। ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग, बल्कि इस पे वो इसकी नोट कर लेना, ये रिकॉर्डिंग ले लेना आज की लाइव स्ट्रीमिंग, एंड दिस विल बी पोस्टेड बिफोर द फुल कोर्ट। हम वहां पे स्क्रीनिंग भी दिखाएंगे। अच्छा, आप बाकी बताइए कौन आया, आपके ऑफिसर कौन आया? व्हेन विल द केस बी लिस्टेड नेक्स्ट ब्लॉट? क्या मेरे को 15 दिन का समय देंगे आप तो अपीयर नहीं होंगे। आप नहीं अपीयर होंगे, वो अपना कोई एंगेज करेगा कोई कौंसल, आप नहीं होंगे। तो कौन सी तारीख दे रही है? तो डे आफ्टर टुमारो, 9। ठीक, आप वो जो भी आप इनको कुछ समय तो दे दें। नहीं, समय क्या देना है? हमने सिर्फ ये जो मना कर रहे थे आप उनके बिहाफ पे आप पूछेंगे कि आपको उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी या आपने बिना इंस्ट्रक्शन कोर्ट में सबमिट किया कि नहीं कुछ नहीं रिसीव किया, और इफ नॉट रिसीव्ड व्हाई 25 लाख पेड, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन। क्योंकि यू हैव वेस्टेड 2 डेट्स एंड रेज द वॉइस के नहीं कुछ नहीं मिला, सब कुछ हुआ है, ये मेंटेनेबल नहीं। हमने भी कहा मेंटेनेबल नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। बट सर, अपने पक्षकार की पैरवी करते करते मेनी टाइम्स द एडवोकेट ट्रांसग्रेस दिस इज नॉट द मिलॉट, दिस इज टू मच मिलॉट। कैसे वकालत करेंगे? मिस्टर लिसन रूपरा, यू आर फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, देन यू अपीयर फॉर द क्लाइंट। बट माय लॉर्ड इज द जज, माय लॉर्ड विल हैव टू हियर मी। आप सुनते नहीं थे। आप बोलते रहिए जो बोलना, ये भी हम सुन लेंगे, कोई बात। इस तरह कोर्ट नहीं चल सकती मिस्टर रूपरा, जिस तरह से आप सोचते हैं कि इस तरह चले, और ये ऐसे आवाज ऊंची ऊंची करके आप सोचते हैं कोर्ट को दबा लेंगे। फॉरगेट अबाउट दैट। मैं एक वाक्य बोलता, आप बीच में बोल देते सर। तो बोलना है, कोर्ट तो बोलेगी, 100 बार बोलेगी, क्वेश्चन पूछेगी। अब जैसे मैंने आपको बोला कि P3 का मेरे को ओरिजिनल चाहिए, उसमें कौन सी गलत बात है सर? अभी उससे पहले क्या बोला? ओरिजिनल चाहिए। कौन सी डेट में बोला आपने ओरिजिनल चाहिए? आज बोला फर्स्ट टाइम। आप उससे पहले मुझे एक डेट में बता दीजिए। सब लाइव स्ट्रीमिंग हर डेट की अगर आपको चाहिए तो। मेरा निवेदन जो है, आपका निवेदन तो आप इस तरह का करें कि मैंने कितनी बार कहा, एक लाइव स्ट्रीम में एक बार दिखा दो। आपने कुछ डॉक्यूमेंट मांगा, कुछ नहीं दिखाओ, कुछ नहीं मांगा। आज आपने ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हम कहते हैं कि वो आया आगे बताता कि जी मैंने कुछ नहीं मिला, स्टेटमेंट देता, हम रिकॉर्ड करते। सर, मैंने अपने जवाब में रिटर्न दिया, आपने उस डॉक्यूमेंट को रेफर किया जो डॉक्यूमेंट आज तक मेरे को नहीं मिला। गलत किया तो आप इसको चैलेंज करो ऑर्डर को। आपको समय नहीं दे रहे, आप एक एक दिन की तारीख दे रहे हैं, हम कहाँ से? आप फिर एक एक दिन की, परसों की तारीख दे रहे हैं हम, अपनी उससे दे रहे हैं। और दूसरा ये, व्हाई ही हैज नॉट अपीयर इन दिस कोर्ट डिस्पाइट द ऑर्डर एंड यू आर वेरी मच प्रेजेंट। मेरा कहना, थोड़ा समय दीजिए। इफ योर लॉर्डशिप वांट्स दैट, समय हो गया, परसों आएगा वो देखेंगे। दैट्स ऑल।